सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आया था, मैं इस साल आया था. So I had an idea कि जो स्वामीनाथ फाउंडेशन है उन्होंने ओडिशा में भी और तमिलनाडु में भी कुछ केस स्टडीज, I put those case studies. मैंने वो ग्रामीण बैंक की केस स्टडी दी, मैंने लज़त पापड़ की दी, कई सारी. I think it does make a difference when you give a lot of impressions from many resources. To raise the example of Grameen Bank, the question was what are the activities of the institutions and mechanism for microfinance, the second part of the question, to improve India's economy. So grassroots level. So can we use the examples only? Obviously NABARD, we will have to talk about NABARD and all that. KAPARD. So one is that you know the concept and other is that you put in the applied things with the theory. But at the same time, you will have to give examples. I mean, for example, there's a talk about Minnowbrook conference, isn't it? I mean, most of you should be knowing that there was a Minnowbrook third as well in 2008 September. Was there one? There was. And you should be also knowing that in Minnowbrook third, there was a new definition of public administration that was given. Was it given or not? Who many of you knows? How many among you know what was the new definition of public administration from the Minnowbrook third? Have you any idea? You should be using Google quite a lot. Google, I'm sorry. He's got a nickname. They would call me Google. So what you do is that you have to have your mobile phone, if it's GPS enabled, and when you're walking outside, when you're talking to people, you can be using it as a dictionary kind of a thing, as a reference of your mobile. I have read 3 or 4 or 5 books, but I think I will just suggest you books, depends which one you find compatible. मैंने पढ़ा है माहेश्वरी, लक्ष्मीकांत, शर्मा एंड सुदामा, प्रसाद मोहन भट्टाचार्य, और मैंने पढ़े से भी कुछ लिया. But I think you can select 2 books or 1 book and then read it repeatedly again and again. और बाकी चीजों को थोड़ा सा रेफर किया जाए. She will also tell you about her books. I had a course as well, especially for public policy. Public policy, brilliant concept. And एक मोहित भट्टाचार्य की सब लोग पढ़ते हैं New Horizons, but there's another book called on development administration, development ethics वगैरह. That is very important. Very important. Particularly मैं आपको बताऊँ IGNOU notes में से you will get 2 topics. One is in anti-development thesis. Anti-development thesis you will not get resources anywhere, even on net. उसमें सिर्फ 2 resources निकलते हैं. एक मैंने एक आर्टिकल लिखा है एक न्यूज़पेपर पे anti-development पे, दूसरा शायद विकिपीडिया पे आ जाता है. So there are only 2 resources on Google as well. लेकिन जो IGNOU के नोट्स हैं वहाँ पे आपको anti-development मिलता है. न्यू लोकलिज्म या लोकलिज्म की जो विवाद हैं वो भी आपको सिर्फ IGNOU के नोट्स पे मिलेंगे और शायद अच्छे से और फाड़िया पे एक जगह पे मिलेंगे. दोनों टॉपिक्स पे आपको थोड़ा लेकिन मैं इसके साथ ही बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स अच्छी हैं. वो प्रीलिम्स के लिए है यूजुअली. अगर आपको पॉसिबल हो जाए तो उसको भी कभी-कभी देखा कीजिए क्योंकि दैट विल गिव अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. फिर उस आर्ग्यूमेंट्स को मैं बोलता हूँ आई कॉल इट मैट्रिक्स. उसको एक मैट्रिक्स में पढ़िए जो मैट्रिक्स आपको बाकी बुक्स देती है लक्ष्मीकांत जो आपको वोकैबुलरी डेवलप हो जाती है किसी सब्जेक्ट की दैट यू कैन गेट फ्रॉम अदर बुक्स एज वेल. बट आई थिंक लक्ष्मीकांत को भी कभी रेफर किया जाए. नहीं आई एम हियर टू प्रेजेंट. Excuse me, different institutes are claiming that you have done coaching from there. There is one coaching institute called Walji Rao. So I was told that I haven't been there. लेकिन फिर मैंने उसका ऐड देखा उस पे लिखा है Congratulations to Dr. Faesal. So they have not written that I was a part of their academy. I have never been to Mukherjee Nagar, and you can read that also from the advertisement that he is first time coming to Mukherjee Nagar. That doesn't matter. I mean, I have not been into any coaching centers. That's a separate issue. One person may need it, other person may not need it. It's like that. If you can manage it yourself. But it's my belief that coaching guidance, it definitely does help. It does help you getting oriented towards it, but you will have also to exert yourself as well. You cannot just leave it at the Khan sir that well Khan sir will he's injecting all the good stuff and he's giving you everything and tomorrow आप खुद कुछ नहीं करेंगे. वो ड्रिप चल रहा है बीमार की तरह पेशेंट की तरह बैठे रहेंगे. वो आपको ड्रिप लगाए बैठे हैं नॉलेज का. कल आप यूपीएससी में चले जाएंगे. Definitely, and I think you will have excellent as well. Excuse me, sir. Firstly, I will congratulate both of you and thank you, Khan sir, for giving us such a great moment. Sir, I want to ask you that will you suggest any specific strategy for the consistencies in study? Because what I'm lacking is consistency. Consistency. How do you say consistency? I've been very consistent, but it shows.
He's rank 1 in first attempt and rank 6 in third attempt. Doesn't matter. So you have to be consistent. So that answer will be, I think, will be answered well by you. Because we lose momentum after myself is also examining of third attempt. So we lose momentum. And there is high chances that we lose out of this competition. So how to continue with this psychological process? See, you have to understand Changing that trend. for you, like I don't know what IS means for you, but for me IS was, as he also said, only a means to an end. So if you have this larger goal in mind that I have to do certain kind of job, and then you assign, okay, IS is one of the best ways to achieve this target, then if you are feeling low, you can just think about that. No, वो काम करने को नहीं मिलेगा फिर, and pull yourself up. And my dad, he always used to tell me, you can't come out of it now. It's like होता है ना, जब मूसल में सर, जब ओखर में सर दिया तो मूसल का क्या डर? You can't be scared now. अब क्या होगा? You have to keep on at it. क्योंकि once you are in this vicious circle, every year you think, नहीं, इतना पढ़ लिया, I can't leave it now. I want to do that kind of work. Moksha के लिए. Carrot stick. This is the search for moksha. Carrot stick and And you have to understand a higher target, a higher goal. If you have that in your mind, then you have to just pick yourself up. I will be more mundane than that. I mean, how will be more mundane is like you will have to think about the last bit. You have to think about the privilege and the perks that you get in IAS. That's like being very mundane, being very, earthly and being very immediate goal oriented. ये चीजें हो जाएंगी, कल आपको मीडिया की attention मिलेगा, your marital prospects will be good. And unfortunately, जो UP and Kerala वाले लोग हैं, बिहार वाले हैं, उनको पैसे भी खूब मिलेंगे. They will sell themselves on good price. वो भी है, that's the unfortunate reality of being IAS or IPS कि आप फिर अपने आप को बेच डालते हैं. किसी आप आपने बोला था तो मैंने बोला this is kind of extortion. आप बेटी भी ले जाते हैं, वो अगर IAS भी है तब भी ले जाएंगे और 4 करोड़ रुपए भी ले जाएंगे उससे. I mean, that's kind of extortion फिर जो हम करने लगते हैं. That apart, I believe कि एक मिशन होना चाहिए. Tanvi said it very right. वो मिशन सच में आपको मोटिवेट करता है. जब भी आप स्ट्रेस में जाते हैं, जब भी आप इनकंसिस्टेंट होते हैं, think about all those people जिनके लिए आपको कल काम करना है. Think about all those miseries जो आपको पेश आई है. You will rock on. उसका उर्दू लिटरेचर में जो सेकंड पेपर होता है उसका पहला और पांचवा क्वेश्चन कंपलसरी भी होता है. अच्छा, शायद कंपलसरी होता है. उसको जानते हैं कि सबसे टफ वही दोनों क्वेश्चन पेपर होते हैं. सर आपने उसके दोनों पेपरों की कैसे तैयारी की कि आपने दोनों का पूरा हिस्सा? मैं पूरी बुक पढ़ता हूँ, मैं प्रीवियस भी पढ़ता हूँ और लक्ष्मीकांत में वहाँ उनको बोल रहा था मैं पढ़ता हूँ टू दीपक, that has been dedicated to Deepak, so I will read that also. मैं बुक छोड़ता नहीं हूँ, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ. लेकिन हाँ, ए पेपर और बी पेपर में ज़्यादा आप कर सकते हैं फोकस, बिकॉज जो उसका लिंग्विस्टिक्स पोर्शन है दैट्स वेरी साइंटिफिक. तो उसमें आपको ज़्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं पड़ती है. एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, वो दिमाग में बैठ जाता है कॉन्सेप्ट. बी पेपर में यू विल हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, अपनी वोकैबुलरी, अपने एक्सप्रेशंस को बड़ा शार्प करना पड़ेगा. अच्छी पोएट्री आपको याद करनी पड़ेगी, फैज की, बाकी गालिब की, अच्छे खासे शेर. I mean, at least you should be knowing 300-400-500 शेर तो आपको याद ही होने चाहिए जो आप बोल रहे हैं. आप वहाँ नहीं लिखेंगे, पता होने चाहिए, आपके माइंड में रिसोर्स होना चाहिए 300-400 शेर का जो आप कल यूज कर सकते हैं वहाँ पे. Farsi also. Farsi में भी काफी. Persian, yes, since I have a Persian background as well, so मेरी vocabulary उर्दू में थोड़ा better थी. I read Rumi in Persian usually. Rumi पढ़ता रहता हूँ मैं. सूफी ख्यालातों का आदमी हूँ मैं. Tanvi, how was that? Good one, yeah. No wonder you ranked 1. GS, yeah, GS. I mean, it's kind of talking about the sea. That sea की जो उसको क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी जो उसकी होती है, ओशिनोलॉजी. अच्छा ठीक है. So GS मेरा ये बिलीफ है कि आपको पहले अपनी कोर सब्जेक्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा. कोर मीन्स पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह. उस पर तो आपको श्योर है कि उसमें से सवाल आते हैं. करंट अफेयर्स इज अगेन इट्स काइंड ऑफ सी, उसमें पता नहीं है क्या क्या पूछेंगे. लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर को और एक जर्नल को और अगर आपको कुछ स्टडी मटेरियल मिलता है, अगर आप उसके साथ थरो हैं और IR पोर्शन में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आपको अच्छी लैंग्वेज लिखनी आती है. और मैं ये भी बोलता हूँ, वहाँ पे भी बोला मैंने, दैट हिंदू में जब आप पढ़ते हैं आर्टिकल्स, डोंट लिटरेचर में एक डिबेट रहता है वर्ड एंड द मीनिंग.
क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है कि मीनिंग इंपॉर्टेंट है? इज इट इंपॉर्टेंट टू से समथिंग और इज इट इंपॉर्टेंट टू से हाउ एंड इन विच स्टाइल आर यू सेइंग दैट थिंग? मेरा ये बिलीफ है दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पढ़ें उस वक्त देखा कीजिए ये बात कैसे कही गई है, इसने किस फ्रेजियोलॉजी में लिखी है, ये क्या वर्ड्स इसने यूज किए हैं, क्या एक्सप्रेशंस यूज किए हैं। तो हिंदू जब आप पढ़ते रहेंगे उस वक्त देखा कीजिए किस तरह से इसने क्रिएटिवली लिखा है। तो यू विल लर्न हाउ टू राइट क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। अपने आप में ये गोल रखिए कि कल जब आप कुछ लिखेंगे क्वेश्चन, हिंदू में नहीं तो किसी लोकल डेली में वो छप जाना चाहिए, इंग्लिश में या हिंदी में। दैट शुड बी आई मीन द क्राइटेरिया फॉर राइटिंग गुड लैंग्वेज। About time management in the GS, especially second paper, both of you. GS in second paper in examination it becomes terribly difficult to be writing there. मैंने एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। तो एक चीज है जब आपके माइंड में प्री फॉर्म्ड आंसर्स होते हैं, जब आपने ड्रिल की होती है अपने साथ, लिखने की ड्रिल नहीं, जब आपने सोच के रखा होता है चीजों को, तो वहां पे पेन नहीं रुकता है। तब भी बी पेपर में वो स्टैटिक्स पोर्शन इतना खतरनाक हो जाता है, वहां पे बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। स्टैटिक्स लास्ट में कीजिए, वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कीजिए, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। दोज आर जनरलाइजेशंस, एवरीबॉडी विल टेल यू अबाउट दैट। वो वहां पे आ जाता है। मैं गया था वहां पे सुबह मॉर्निंग में एग्जाम देने के लिए, मैंने घड़ी